Now experiment number 9. Experiment number 9, to write and execute MATLAB code for convolutional encoder and decoder. As we know, what is the convolutional encoder? So that is, it is a fixed line shift register having finite number of flip-flops, flip-flops. So and the logic is applied for generating the convolutional code. So the same thing we will do in this MATLAB program. So first we use the MATLAB software. Now program. So in the initial we will initialize something, that is it is the clear command and CLC and clear instruction, and from convolution it is the initialization. So let the input bits are this 110 10 110 110 110 110 110. So there are 20 bits, and we are having the contents of flip-flops, that is the shift register, which contain 5 flip-flops, M in, M1, M2, M3 and M4. So initially we clear the flip-flop, that is M1 equal to 0, M2 equal to 0, M3 equal to 0 and M4 equal to 0. So initial contents of the flip-flops are 0, and it is M in. M in will have the input from the given bits, that is the convolutional in. Convolutional in bits are there. So these bits will be inputted in the M in variable, and it is the logic for convolutional code, that is it is the 3 bit output is 3 bit output of the convolutional code, which is x0, x1 and x2. So in the x0 M in flip flop, M2 flip flop and M4 flip flops are connected through modulo 2 adder, and at the x2 output flip flop M in, M1, M3 and M4, and similarly for the third output, that is the x2, all flip flops are connected through modulo 2 adder. So it is the initialization. Now we will we will use the logic, that is what we will do, we will take bits one by one, and we will convert the input source bit, it is the source code bit, convert into the channel coded bit, which is the convolutional code. So we will use the for loop. Okay, for loop is will repeat for k equal to, we will let it, k is the initial, k is the pointer, so k will point all the bits of the convolutional in variable. So k equal to 1 to length of convolutional in. Okay, it is underscore sign, it is missed in the pasting. So we will use the for loop. So for loop is k equal to 1 to length of convolutional in. Okay, length of convolution, that is there are 20 bits, so k equal to 1 to 20. So in the initialization we can take any bit sequence as you want to use. So we will take this. So I have taken this 20 bits, you can take any bits. So k equal to 1 to 2, these the loop will be rotated. So at k equal to 1, so what is k equal to 1? First polynomial, that is we are defining the outputs, which is x0, x1, x2 and 3 bits output are x0, x1 and x2. Okay, so these are the 3 bit output. First we will initialize the polynomials, then we will have the output, which is x0, x1 and x2. So what is the logic? That is the M in the initial flip flop will take the value from the convolutional in variable matrix, that is first bit will be 1. So this 1 will be inputted to the M in. So M in is equals to 1. Now what is the logic for x0? X0 is equals to क्या रहेगा? It is the M in XOR with M2 XOR with M4. So XOR में तो 2 ही बिट हम यूज कर सकते हैं. So first we will take temporary register which will perform XORing of M in and M2. ठीक है. Then X0 will have the XORing of this M in, M2 and M4. So X0 equal to क्या हो जाएगा आपका? M in plus M2 plus M4. That is, it is modulo 2 addition. ठीक है. We can say it modulo 2, but actually it is performing bit XORing. Similarly, the second output can be obtained
फ्रॉम दिस मैट्रिक्स दैट इज x1 इक्वल्स टू क्या है आपका m इन प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, m इन प्लस m1 प्लस m3 प्लस now फिर similarly for x2, that is what is the value of x2. x2 is equals to modulo to addition of m1, m in, m1, m2, m3 and m4, that is all the flip flops. So first one by one, that is where we will take the pair of flip flop, that is we will perform bit XORing of m in with m1. Similarly फिर the bit XORing of temp1 contain the bit XORing of m in and m1. Similarly temp2 contain the bit XORing of m in, m1, m2. So we will have the last output, which is the x2 is equals to bit XORing of temporary 3, that is the modulo to addition of m in, m1, m2, m3 and m4. So x0 will contain the first output, x1 will contain the second bit of the output, and x2 contain the third bit of the output. Yeah, you can say the third output. Okay? So because the convolutional encoder is three output and one input convolutional encoder, that is code rate is 1/3, that is k by n जो आपका रहता है in the definition, from the definition. So k by n, that is one input and three output. So one input is k, output are 3, that is x0, x1, x2. Now this variable convolutional out will contain all the outputs in one variable, that is convolutional out. It will indicate the x0, x1 and x2, that is convolutional out 3 into k minus 2 equal to x0. मतलब क्या रहेगा, अभी k की वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 into 1 that is 1, 3 minus 2 1. So जो पहली वैल्यू कहाँ पर है x0 की, सिमिलरली सेकंड वैल्यू जो रहेंगे x2 की रहेंगे और थर्ड वैल्यू x2. So convolutional out variable will contain all output at a time in one matrix. Similarly now this k equal to 1 is already running. So now next step is, now we will display the output. ठीक है, so display output, that is input bit equal to convolutional in जो रहेगा आपका, that is हमने जो अभी input bit वेरिएबल जो यूज किए वो क्या लेंगे, input bit k इक्वल टू, जो भी k अभी k इक्वल टू 1 है, तो एट द कमांड विंडो k इक्वल टू 1 विल बी डिस्प्ले. मतलब हमने यहाँ पे k लिखे ना, तो k विल बी डिस्प्ले, k की वैल्यू क्या है 1, तो 1 विल बी डिस्प्ले इन द कमांड विंडो. सिमिलरली आउट हमने यू कैन टेक दिस ओनली कन्वोल्यूशनल आउट, ये भी आप लिख सकते सिर्फ, या आउट इक्वल टू x0, x1, x2 ये भी लिख सकते, दोनों का मतलब वही है. ठीक है, इफ यू राइट कन्वोल्यूशनल k एंड कन्वोल्यूशनल आउट, k लिखेंगे उसके नीचे आप कन्वोल्यूशनल आउट लिखेंगे तब भी वही डिस्प्ले होगा, या k लिख देंगे आउट इक्वल टू क्या लिखा आपने मैट्रिक्स इन द मैट्रिक्स k x0, x1 एंड x2 तब भी वही डिस्प्ले होगा. नाउ शिफ्टिंग, ठीक है, तो अभी जो k इक्वल टू 1 है, तो अभी क्या रहेगा, शिफ्ट रजिस्टर में क्या होगा, जो पहले फ्लिप फ्लॉप का कंटेंट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, दूसरे फ्लिप फ्लॉप के कंटेंट तीसरे फ्लिप फ्लॉप में, तीसरे के चौथे में, चौथे के पांचवे में. तो सो अभी हम क्या करेंगे लास्ट वाली में, दैट इज m4 इक्वल टू m3. सो कंटेंट ऑफ m3 विल बी शिफ्टेड टू m4, m3 इक्वल टू m2, द कंटेंट ऑफ m2 विल शिफ्ट इनटू फ्लिप फ्लॉप m3. सिमिलरली कंटेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप 1 विल बी शिफ्टेड टू फ्लिप फ्लॉप 2 एंड फ्लिप फ्लॉप m in विल बी कंटेंट टू शिफ्टेड टू फ्लिप फ्लॉप n1. ठीक है, अभी नाउ k विल बी इंक्रीज बाय 1, दैट इज k इक्वल टू इंक्रीज बाय 1, सो दैट इज 2, k इक्वल टू 2 हो गया, दैट इज m in इक्वल टू कन्वोल्यूशनल इन ऑफ 2 क्या है आपका, अभी जो दूसरी बीट है, सेकंड बीट अगेन आपकी 1 है, फिर से वही चीज परफॉर्म होंगी, मतलब m in इक्वल टू कन्वोल्यूशनल इन टेम्पररी, फिर से अभी हम तीनों आउटपुट को जनरेट करेंगे x0, x1, x2. ठीक है, एंड वी विल यूज द वेरिएबल कन्वोल्यूशनल आउट, विच विल कलेक्ट ऑल द आउटपुट्स. ठीक है, नाउ इनपुट इक्वल टू कन्वोल्यूशनल इन k इक्वल, दैट इज k इक्वल टू क्या है अभी 2, k इक्वल टू क्या आपका 1 है, तो फिर 1 डिस्प्ले होगा और आउटपुट जो कंटेंट्स थे आपके वो डिस्प्ले होंगे, दैट इज ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, इनपुट बिट आपका क्या है ये, ठीक है, पहले इसमें आपका इनपुट बिट 1 है तो 1 1 1 डिस्प्ले होगा, दूसरे बार आपका इनपुट बिट 1 है तो 1 0 0, जो भी वैल्यू आएंगे आपको ये हमको कैलकुलेट नहीं करना, इट विल बी कैलकुलेट बाय मैटलैब. ठीक है, ये मैटलैब कैलकुलेट करेंगे, x0, x1, x2 की वैल्यू क्या आ रही वो मैटलैब कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सिमिलरली थर्ड बिट जब k इक्वल टू, फिर अब क्या होगा, फिर शिफ्टिंग होगा. ठीक है, देन शिफ्टिंग विल बी परफॉर्म,
ठीक है. That is the content of M3 will be shifted to M4, content of flip flop M2 will be shifted to M3, content of M1 will be shifted to M2 and M in into M1. ठीक है. अब k equal to k will be increased by 1, that is 3. ठीक है. तो 3 जाएगा, k equal to 4. नाउ k विल बी इंक्रीज बाय 1, दैट इज k इक्वल टू 3 हो जाएगा. फिर से x0 x1 x2 कैलकुलेट होंगे. देन इनपुट बिट इक्वल टू जो भी रहेगा आपका भी, जैसे कि k इक्वल टू 3 है, सो इनपुट बिट में k इक्वल टू 3 मतलब थर्ड बिट, दैट इज थर्ड बिट इज 0. सो 0 विल बी स्टोर्ड इन द इनपुट बिट वेरिएबल एंड the position k equal to 3 will be displayed in the command window and out equal to क्या आपका x0 x1 x2. These 3 bit will be displayed in the command window like this. मतलब this 110 will be displayed in the command window. Similarly now then shifting, that is shift register, content of shift register will be shifted by one bit. So again the same process will be repeated. Again k equal to k will be increased by 1, that is k equal to 4 5 6 and so on till 20 तक के ये repeat होगा and it will have the input from the which matrix we have defined in the initial line and correspondingly we are having the output codes. ठीक है. So in this table we are showing the value of k. It is the value of k which is the serial number. ठीक है. And output, these two things will be displayed in the command window, that is 1 to 20 and this output code, that is 111 100 110 001 101 and 10 and so on. So it will show all the outputs of the input bit applied at the input of convolutional encoder. So it is the experiment of convolutional encoder.